एक पंडित जी थे यहाँ पे ग्वालियर में, मुझे नाम याद नहीं, शायद मोतीलाल नाम था उनका। देखिए ऐसा सेशन टेक्निकल किसी ने लिया नहीं होगा आज तक आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनसे पूछा आईटी में हो गया क्या, पास हो पाऊंगा कि नहीं? बोले टॉप करेगा। हो गया टॉप, वाकई में टॉप हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। बीटेक में जो काम किया था दैट वाज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अ मैकेनिकल रोबोट। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज थी उस जमाने के हिसाब से, फार अबव लेट्स से व्हाट पीपल कैन थिंक। जब एमटेक में काम किया, और मेरा एमटेक में डेजर्टेशन होता है जो 1 साल का पीरियड होता है, हम लोग ना 2 साल के पीजी वाले लोग हैं, 1.5 साल वाला नहीं था हमारा। तो उस डेजर्टेशन के बाद में मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया कि ज़िंदगी में इतना काम मैंने कर दिया है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। ठीक, बहुत अच्छा काम था। इट वॉज it involved working on an advanced manufacturing process where ultrasound was used to remove material. उसके बाद मैंने कुछ इंडस्ट्री में काम किए, इधर उधर घूम फिर के, कुछ एकेडमिक्स में काम किए। मेरी माँ फिर पीछे पड़ी रही, और पढ़ ले और पढ़ ले और पढ़ ले। तो मैंने कहा पीएचडी में एडमिशन ले लेता हूँ, ले लिया। पीएचडी में जाने के 3 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि जीवन में आज तक जो किया था वो नगण्य था, वो कुछ नहीं था। अब जो कर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, वो आगे नहीं हिलता। ठीक, रिकॉर्ड टाइम में मैंने पीएचडी ख़त्म की। जिस दिन ख़त्म करने वाला था उस दिन किसी ने पूछा कि यार अब पीएचडी ख़त्म हो रही है, सबमिट कर रहे हो, क्या करोगे? मैंने कहा मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला बताएगा क्या करेगा। दोपहर में 1:30 या 2 बजे का टाइम था, एक कॉल आता है, डॉक्टर द्विवेदी। मैंने कहा नहीं, मैं भी डॉक्टर हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अक्षय हूँ, बताइए क्या बात है। वी हैव अ पोजीशन फॉर यू, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो मैंने कहा जी ये कौन हो? बोले वी आर फ्रॉम अ कंपनी नेम थर्मिक्स, वी वर्क इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वी हैव अ पोजीशन विच इज फॉर प्रिंसिपल साइंटिस्ट। यू हैव टू लीड अ ग्रुप इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यू हैव टू लीड R&D एफर्ट्स। मैंने कहा मैं तो तुम्हारी कंपनी को जानते, तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो बोले वो छोड़िए, आप तैयार हो तो आई कैन शेड्यूल एन इंटरेक्शन। मैंने कहा देखो अभी मैं थीसिस सबमिट करने वाला हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ, मैं इसको सबमिट करके रात को रुड़की से चलूँगा, सुबह ग्वालियर पहुँचूँगा और आप सुबह मुझसे बात करना। तो विल इट बी ओके इफ आई शेड्यूल अ कॉल विद यू विद अवर मैनेजिंग डायरेक्टर? फाइन। सुबह 9 बजे उस समय वो होता था स्काइप यूज़ करते हैं, तो स्काइप पे साहब वो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कुछ बातचीत हुई। मेरी वाइफ आज यहाँ हुई, उस समय भी वहाँ उसी कमरे में बैठी हुई थी कंप्यूटर स्क्रीन से छुप के, और पौन घंटे के बाद में हमको पता पड़ा कि हम वहाँ जा रहे हैं। इन थर्मिक्स आई लेड प्रोजेक्ट्स विच वर इन ट्यून ऑफ 1000 करोड़ 1500 करोड़ ऑन विंड एंड एनर्जी। बहुत सारा रिसर्च मैनेज किया। मिशेलकर साहब का नाम सुना है? R मिशेलकर साहब का नाम सुना? नहीं सुना तो गूगल बाबा जिंदाबाद, ढूंढिए मिशेलकर कौन है। बच्चे तो सबसे पहले ढूंढेंगे, देखो जरा कौन है R मिशेलकर। मिला क्या नाम? कुछ बड़ा सा नाम है क्या? कौन है? अगर आपने नाम गलत भी लिखा होगा ना तो गूगल बता देगा सही करके। हाँ, कौन है? कोई बड़ा सा नाम है क्या? हाँ बिल्कुल सही नाम पकड़े, बड़ा सा नाम है ना, बड़ा मतलब व्यक्तित्व बड़ा, उनके संग काम करने का मौका मिला। एंड देन आई रियलाइज कि सोचने से और चाहने से ना सब कुछ हो जाता है, ईश्वर अपने आप चीजें मिला देता है। The thing is, when we talk about Industry 4.0, it is very important for us to realize what is our potential. And to do that, the most important 2 keywords which you have to remember is believe in yourself, or I should say believe in you. Because you are the most important entity of our country as a system,
And when all of these entities merge together, we would be able to really create a transformation. Despite of your background of mathematics, management, finance, marketing, mechanical engineering, electronics engineering, or maybe if you have a background of only a polytechnic, it really doesn't matter because you can play a very important role in this transformation. To do that, what is most important is you identify what is your objective and you need to follow the right path or maybe create a new path. If you think that you are the only person who can lead an entire change, sorry, ऐसा नहीं होता. हिंदी में कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता. लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे चने मिल जाए ना तो सब कुछ हो जाता है. This implies if you know, even if let's say the surface knowledge of what AI is, how that particular AI can be used for production, how that particular AI can be used for process monitoring and control, how that particular AI can use for logistics and supply chain, how that particular AI can be used for creating overall workflow. That entire workflow becomes productive, where productivity improves. मैं किसी एक को यूज करूं या तो इसको या इसको एक को बंद कर दो. Is it okay? Fine, audible, perfect. ये सब रिकॉर्डिंग के लिए क्या रिकॉर्डर माइक यूज कर सकते हैं? चलो ठीक है. देखो यार, मैं ना कुछ लिखा हुआ पढ़ा हुआ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा थॉट प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है. अभी ठीक ठाक है? ओके. We all have access to Google. Yes, we all have access to YouTube also. Can we learn from it? Of course, yes. But the issue is, whatever that is available to us, is it really right? Maybe we are not very sure. आज पिछले कुछ सालों ना में एक दो शब्द चलने लगे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. ठीक है? Without going in that political satire, what that particular combination of word goes. But yes, we get a lot of information on that particular WhatsApp. Sometimes it is useful, sometimes it is not. But if we have, let's say, even surface knowledge for some of those emerging technologies, things can really help. With this thought process, I will request you to maybe listen to me for next 10-15 minutes. Then I will bring this entire context to your particular specific domain. When Industry 4.0 came into picture, the idea was very simple. Whatever that you have been doing, can you do something in a digital way? Digital does not imply that only software is there. It was basically bringing or merging the gap between software and hardware. Whether it is a production job, for production, the sequence is very simple. I will give you those particular steps for those who do not have a background. You see, whenever product comes into picture, the first step is there has to be a need. हम लोग सुनते हैं ना, वो क्या आवश्यकता इसकी जननी है, क्या होता है भाई? वो आविष्कार की जननी. बहुत बढ़िया. The thing is, whenever a product has to be made, the idea is very simple. There has to be a demand. Somebody should be able to buy it, and this implies the need is the first and most important point. From where this need comes? Answer: if it is an old technology, or maybe technology which is continuously going on, this particular needs come from marketing. So there will be a team of marketing which will be searching for the need. They will see that, okay, what are the current products available on this technology in the market? Can I create a product which is better than those products so that I have an edge? Can I create a product which has multiple features but at a lower price? This is how need comes. Management people, since I belong to a mechanical engineering background, and sometimes I funnily say it is hathoda chap, but our understanding of business is that there is only two ways to sell a product. One is you make it far better than the entire competition, create a breakthrough. The second approach is you create something which is extraordinarily cheap. Nobody can compete on that particular level.
तीसरा कोई तरीका मुझे आज तक तो नहीं मिला, आपके पास हो आप बता देना, आई विल बी हैप्पी टू लर्न इट. This is the key thought process for that particular need part. When need is identified, the next step comes design synthesis. Design synthesis implies that there has to be a team of people who will be designing a particular product, who will be learning that, okay, from where material will be coming, who will be that particular, let's say, force analysis if something is needed, if some kind of a temperature analysis needs to be there, what will be those particular property requirements. And then there has to be a mechanism that, okay, with this particular mechanism, this particular product will perform its intended feature. With design synthesis, you have overall idea. जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो design synthesis is like नक्शा. ठीक, एलिवेशन ऐसा दिखेगा, उसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा, दिस इज हाउ थिंग्स विल बी देयर. फाइनल कंप्लीशन के बाद में दिस विल बी, लेट्स से, द फिनिशिंग मटेरियल दैट विल बी यूजिंग, ऑल ऑफ दोस पर्टिकुलर थिंग्स. आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट फॉलोइंग पावर पॉइंट्स, सो दिस इज जस्ट फॉर शो वैल्यू. ऑलराइट, बट फील फ्री इफ यू हैव एनी query with respect to whatever slide that you see. The subsequent step is material procurement. This implies somebody will be searching the market. Okay, my design team has given me this particular material, this particular property. I need to explore where it is available. All right. ये कुछ सामान खरीदने जैसा है. This also implies when material procurement comes into picture, they have to keep in mind, once procured, where this particular material will be stored. Giving you a very simple example, अभी ना वो Amazon Flipkart पे सेल खत्म हुई है, क्या नाम था उसका? बिग बिलियन सेल. तो मान लीजिए, अच्छा चाय सब लोग पीते हैं ना? फाइन. बिग बिलियन सेल में मान लीजिए ताजमहल की चाय मेरा ख्याल है 600 रुपया किलो करीब करीब होगा, मोटा मोटा. उस पे उन्होंने 580 है मैडम, क्या बात है, देखिए. मे बी दे गिव यू अ 50% डिस्काउंट, तो 580 का 50% हो गया, गुड डिस्काउंट है जी. मान लीजिए मैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट का हूँ एंड आई गो एंड आई बाय, लेट्स से 10 kilograms. व्हाई? बिकॉज आई गेट अ 50% डिस्काउंट. तो मैडम नाराज होगी क्या 10 डब्बे डिलीवर आएंगे तो? क्यों होगी? महीने में 1 किलो 1.5 किलो से ज्यादा किसी घर में खर्च नहीं होती चाय की पत्ती, ये मेरा एस्टिमेट है. तो अगर मैंने वो एक साल में 10 किलो खरीद लिया, एक साथ में, सॉरी, मुझे रखना पड़ेगा ना उसे कहीं. मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चूहे भाई साहब को वो पसंद नहीं आ जाए. दिस implies I need to keep some investment for that space. I need to create certain specific conditions which we have to meet, and this implies money will be going in that. So material procurement has to also keep that in mind. The ideal condition how our industry work is zero inventory. Inventory is the raw material which is being used for a particular production job. Zero inventory means absolute zero. तो घर में मेहमान आएगा तब भागोगे चाय लेने के लिए, क्यों? क्योंकि आप तो जीरो इन्वेंट्री वाले हो. समझे बात को? लेकिन आइडियल सिचुएशन वही है. क्यों? क्योंकि आपको ना स्टोरेज के लिए जगह रखनी है, ना आपको डेड मनी रखना है. क्योंकि जब मैंने 10 किलो खरीदा था 50% डिस्काउंट पे, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा दिया था ना मैंने, वो बैंक अकाउंट में रहता तो हो सकता है इंटरेस्ट मिलता. मैंने क्या किया, 1 किलो का पैकेट तो चलो मैं यूज कर रहा हूँ, वो 9 किलो तो डेड मनी है. इट इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग. Industry has to work in just in time concept. Just in time implies whenever needed, you have that particular raw material available. For students, if possible, try to scribble down these phrases. It will help you, especially in your interviews. Okay, if you do not have a pen and paper, maybe write on your mobile phone, whatever is available. From material procurement, the next stage comes where somebody has to plan the manufacturing part. And my example is now going towards manufacturing because we are talking about a physical, tangible product. Manufacturing implies there will be some machines which will be used for the manufacturing process. Each process has got certain processing steps. मान लीजिए 10 step है. So those 10 machines should have been placed in a particular order. That okay, this is the sequence. Each machine will be using some manpower.
That manpower will also have a different training requirement. So when I will start production, the manpower should be available. What sort of training needed, that manpower should have this understanding. So it is a very complicated kind of a thing. So production planning is an important step which involves lot of efforts, and many a times it is not a physical effort, but it is planning. It uses numbers. For data analytics, this is that particular stage where data analytics becomes a very important tool, and many things can be done on pen and paper. Management people, सामान खरीदना है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में लिया, अगर वो रॉ मटेरियल लिया था तो वो रॉ मटेरियल था ओपेक्स कॉस्ट का पार्ट. ठीक कह रहा हूँ, ओपेक्स ही होता है. मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की स्टेज पे जब मशीन की बात करी, सो वी आर बाइंग आइदर ए न्यू मशीन और अपग्रेडिंग समथिंग. वी आर इन्वेस्टिंग इन केपेक्स. Optimizing OPEX and CAPEX in a way which creates maximum profit is your duty. Am I right? So this implies there is an important role for you to play in it. Management people from, let's say, different perspectives need market analysis. It is coming from outside your role. Where an engineer comes into picture, he or she comes in material procurement because they have to have a technical understanding of what is the raw material that is to be purchased. And of course, with that, they need to broaden their thought process because they also need to understand market. When manufacturing planning comes, it is mathematics. Manufacturing planning में हम क्या करते हैं, किस मशीन पे प्रोडक्शन को हम करें ताकि बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकले. बेस्ट इज वेयर द मशीन एफिशिएंसी इज 100%, द वर्कर यूटिलाइजेशन इज 100%. क्या है ये? ऑपरेशन रिसर्च है, मैनेजमेंट का पार्ट है कि मैथमेटिक्स का पार्ट है? प्राइमरीली मैथमेटिक्स, बट इट इज यूज्ड बोथ बाय मैनेजर्स एज वेल एज इंजीनियर्स. Can it be done by some algorithm? Oh yes, if algorithm comes into picture, are we talking about AI? Yes sir. इतना आसान है. अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं, अभी हम सिर्फ हवा में हैं. The next step in this particular cycle is real production. Real production implies machine will start, machine will stop. While it does it, it has to ensure that the daily production quantity, what has been decided, it has been produced in the same way. Does it require some mathematics again? Of course, yes. Does it require optimum utilization of manpower as well as machine? Of course, yes. Does it also requires utilization of energy? Why? Because when a machine is going to run, it will require energy. कहाँ से आएगी? सर पावर हाउस से. पावर कट लगता है क्या आजकल? पावर कट लगता है क्या आजकल? कितनी देर का? कोई शेड्यूल पावर कट है कि इतने बजे जाएगी, इतने बजे आएगी? जो रैंडम है उसका तो कुछ हो नहीं सकता, कोई शेड्यूल्ड है? मुझे याद है शायद सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एक पावर कट कभी हुआ करता था, 2 घंटे का. अरे मैं भी तो पुराना आदमी हूँ. The thing is, if your unit is in an industrial area, you need to understand that usual timings, factory timings will be starting 8 a.m. or 9 a.m. and then it will run in shifts. And if you have to ensure that your plant has to run at all times, maybe 3 shifts, you need to identify from where captive power comes into picture. And this implies more resources, but those resources where the resources are best in terms of providing you a certain enhancement in terms of energy. सोलार ले लूं, विंड ले लूं, हो सकता है जियोथर्मल ले लूं, if possible. That requires a lot of processes. Chemical engineering comes into picture, electrical engineering comes into picture, all of that particular planning comes into picture. ठीक है जी. अब मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया. The issue is I do not know whether this particular product is good or bad.
or whatever that was conceived by the design synthesis people, whether I was able to reproduce that particular same thing in tangible form. This implies somebody has to check it, whether there is a deviation between what was designed and what has been made. मैम एफिशिएंसी की बात तो तब करूंगा, पहले तो पता हो कि जो चीज बननी थी वो बन रही कि नहीं. ठीक. एक वो मैम कोई इवेंट होता है जिसमें वो महिलाएं झूला वूला लगाती हैं, कौन सा होता है यहाँ पे कुछ लोकल रीजन में? तीज में होता है, वो आम के पेड़ के नीचे लगाया जाता है. झूले में कितनी रस्सी होती है? मुझे कुछ ज्यादा देना है, मैं 3 लगाऊंगा. नहीं, वो तो आपको पता है ना, मुझे थोड़ी पता है. आपने कहा तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि ये झूला जब झूले तब वो गिर जाए, तो मुझे थोड़ा सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं 2 की जगह 3 रस्सी लगाऊंगा. झूले का काम हो पाएगा? अच्छा, झूला जब झूल रहा है, एक टहनी पे लटका हुआ है, मान लीजिए वेट ज्यादा हो गया, वो टहनी टूट गई, तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसे झूला लटकाऊंगा, एक नीचे प्लैंक होगा, उस प्लैंक के नीचे भी सपोर्ट लगा देता हूं कि टहनी पे लोड कम आए, तो झूला काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. The key question that we have is whatever was designed by design synthesis people, as a manufacturing person, was I able to reproduce it? If the answer is no, sorry boss, I did a bad job. But who is going to tell it? आपने एक एग्जाम दिए, उस एग्जाम में आपसे कोई सवाल पूछे, आपने जवाब लिखे, बाद में टीचर साहब आए, बोले ऐसा करो अपनी कॉपी खुद ही चेक कर दो. बोले सर सॉल्यूशन, बोले सॉल्यूशन क्या है, जो तुमने लिखा वो तो अपने आप देखो सही लिखा है कि गलत लिखा है. तो कितने नंबर दोगे खुद को? पूरे दोगे भाई, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो तो सब कुछ सही है. The thing is, there has to be a third-party evaluation from what was designed and what has been manufactured, and this evaluation also need to ensure that there is no bias in it. In an industry, usually quality assurance or quality control team does it. How do they do it? They have some particular instruments by which they measure. In certain cases, they count. So there are things that we can count. There are things that we can measure. ठीक. डेंसिटी है जी किसी मटेरियल की, डेंसिटी का कोई यूनिट होता होगा ना, क्या होता है? अच्छा जी, तो इसका मतलब कहीं पे वॉल्यूम भी आ रही है इसके अंदर में और कहीं पे वेट भी आ रहा है. ठीक है. कहीं पे वेट भी आ रहा है, कहीं पे वॉल्यूम भी आ रही है. इसका मतलब मैं इसको मेजर कर सकता हूं ना. फाइन. अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मुझे वेट नहीं कर पा रहा मैं, तो क्या मैं यूनिट काउंट कर सकता हूं? जैसे in a box there are maybe 24 sub boxes. All right, can I count those 24? Of course yes, somebody can do it. This same very simple concept when involved with vision analysis which employs a camera, where the camera has an algorithm to count, and that algorithm gives a input to a processor. The processor does some calculations and give you a visual output, is utilization of AI for seeing whether what was designed, the same thing has been manufactured or not. सीधी सी कहानी है. आज की तारीख में हाईवे पे जाइए, स्पीड लिमिट 100 है, आप चलाइए वहां पे 120 पे, जैसे ही घर पहुंचेंगे एक SMS आएगा, भाई साहब क्या हुआ जी? आपकी गाड़ी के नंबर की विजन एनालिसिस करी उसने, आपकी गाड़ी की स्पीड की रेडार से एनालिसिस करी, एंड बाय दीज 2 थिंग्स दे आइडेंटिफाइड यू मेड अ मिस्टेक. Why that mistake was there? Because there was a difference between the defined speed and your speed. Execution level, communication came into picture, SMS sent to you. क्या है जी? AI है. So can we do this particular same thing on manufacturing end? Why not? Yes. Fine. So I designed something, I manufactured something, somebody has now said, okay, it is right.
using whatever approaches. Now comes the next requirement. Somebody has to take it to the market. Why? Market implies there has to be a real use. चलिए मैडम, ये जो आप साड़ी पहने हैं उसका क्या मटेरियल है? कौन सा कॉटन है? मैडम थ्रेड काउंट कितना है? अच्छा मैडम, जो कलर है, इस कलर का क्या नाम है? सर आपको ये कलर पिंक लग रहा है क्या? अच्छा, मेरी शर्ट का कलर पिंक है क्या? लाइट पिंक। देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली. whenever we talk about customer mindset, it is next to impossible to capture that particular customer mindset. When I ask sir, is my color shirt's color pink? Maybe उनको भी लगेगा पता नहीं यार, पूछ रहे हैं तो ठीक ही है, कुछ कह देता हूँ. But कौन सा वाला pink? Whenever we talk in terms of manufacturing, whenever we talk in terms of engineering, we talk in terms of numbers. We really do not know what is pink, because pink will be having a shade and that shade will be having a number, and this number we will be using for indexing. So when we make a product and take it to the market for selling, I do not know customer will be happy with that particular product or not. Maybe customer doesn't know how to use that particular product. So there is an after sales team which is there, which captures again feedback from the market. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये यंग बच्चे रखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे. मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है आप? ओके. बच्चों, कभी नया खिलौना कभी खरीदा है बचपन में? ऐसा कोई याद आ रहा है? उस समय अच्छा लगा था जिस समय आया था? बच्चों, एक हफ्ते बाद उस खिलौने का क्या किया था? क्या किया था? खराब हो गया था कि तुमने कर दिया था? सच सच बताओ. तोड़ दिया था? क्यों? क्या किया था? मैं बताता हूं आपको. उनकी गलती नहीं है, हमने भी ये किया, आपने भी ये किया है. Whenever somebody gets a new toy, first few days it is excitement. I have an accomplishment. I have something which is great. It is not available with anybody. It can do this and it can do that. After 4-5 days, 7 days, पलंग के नीचे पड़ा होगा, 4 टुकड़े उसके होंगे. रीजन, हमको देखना था इसके अंदर क्या है, और हम इसमें ये और बढ़ाना चाह रहे थे कि ये और हो जाए. The thing is, when a customer has an opinion about a particular product which is need in market, and when a customer sees that particular product by completing cycle, since now he has seen a physical product, the need changes. So for that, after sales, feedback, reviews, marketing की टीम के लिए बहुत important requirement है, because feedback or reviews are usually qualitative, or in certain cases they are basically some text to take a logical outcome from that particular text. Maybe natural language programming is needed. NLP नाम सुना हुआ है, कंप्यूटर साइंस वाले यूज भी करते होंगे. NLP. सर आपने किया क्या? सर ने एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल इंडस्ट्री के लेवल पे बताई, और बताया हर जगह पे कहाँ पे AI पिक्चर में आता है. चलिए, the issue is our courses right now in universities are really not designed to take care of these new emerging technologies. There has been multiple improvements, there has been syllabus revisions, but what happens is, if I am a mechanical engineer, somebody talks about me how you will be including AI, I'll be looking things from my perspective. A person with electrical engineering background will be looking from their perspective. वो कहेंगे okay, I will do signal processing and for that I'll be using AI. मैकेनिकल वाले को लगा भाई सिग्नल होता क्या है यार, कौन से सिग्नल की बात कर रहे हो? Similar to that, maybe somebody who is from a different background, they will again see from different perspectives. And these are not 3 people, these are 3 different specialization domains. The problem is, we still have not evolved up to that particular level where we really understand things from a bigger perspective. यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है. And because of this, maybe our academic ecosystem needs certain level of improvement. Will a university do it? Or maybe shall UGC tell us? Or will AICTE will be telling us? Oh yes, they will be doing it, no issues about it.
But the thing is, if as a teacher you know about these particular things and you start thinking in that direction, you are the best person to do it. How can you do it? डिजिटल ट्विन का नाम सुना है आप लोगों ने? डिजिटल ट्विन, डिजिटल ट्विन क्या होता है सर? मुझको तो पता है, बाकी लोगों को पता चल जाएगा, ऐसे बताइएगा। जैसे कोई फिजिकल अपना इंस्ट्रूमेंट है या फिजिकल कोई भी सिस्टम है, उसका एक ट्विन होता है जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी भी टूल के थ्रू उसके जो करंट सिचुएशन है उसको उसके थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर उसमें क्या क्या डैमेज कब हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करंट प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हम वंडरफुल, ट्विन के माध्यम से पता लगाते हैं। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन इन वेरी सिंपल टर्म्स। कार में बैठे हैं सब लोग, एक कार में सामने डैशबोर्ड होता है, वो बताता है कार की स्पीड इतनी है, एक मीटर है ना जो दिखा रहा है, ठीक, वो बताता है कि फ्यूल इसके अंदर इतना बचा है, अगर वो ईवी है तो परसेंटेज में बता देगा भाई बैटरी इतनी बची है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर इन दैट इंफॉर्मेशन क्लस्टर। द थिंग इज यू आर सिटिंग इन अ कार and you have this information. Can you have this information, let's say 5 kilometers away from this location? If yes, can you have information of 5,000 such cars at a particular place? If yes, what will happen? अब एक छोटा सा रियल एग्जांपल बताता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इन फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, मैं ईयर नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत मेजर चेंज सन 2025 में हुआ है, जब हिंदुस्तान में दो बड़ी कंपनियों ने आग लगा दी, एक था महिंद्रा, दूसरी थी टाटा। उन्होंने निकाली हैरियर, इन्होंने निकाली XEV और VE6, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी बना सकते हैं, आजा टेस्ला बिल्ड कर से। बट दैट वाज अ मेजर चेंज। Two-wheeler EV market was already growing. For all these EVs, you need to charge batteries. ठीक है जी, मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे महिंद्रा की XEV 9e है, it has a 79 kilowatt hour battery. To charge it, there are multiple options which are available. सबसे सिंपल ऑप्शन है सर 3.5 किलोवाट का चार्जर है, गाड़ी के संग में आता है, गाड़ी 0 से 100% चार्ज होने में 30 से 32 घंटे लेती है। हाउ मच? 30 to 32 आवर्स। भैया यूज करोगे क्या? 30 घंटे गाड़ी खड़ी करूंगा तो फिर चलूंगा कब? ये होगा बेटर ऑप्शन। Go for a 7.5 kilowatt charger. It will take 11 to 12 hours. Anything better than that? Go for 11.5 kilowatt charger. It will take 7 to 8 hours. Good enough? I can charge my car in one night. Any other option? Sir, you can go for a 22 kilowatt charger. It will be charging in 3 hours. Anything better? Sir, you can go for a 160 kilowatt charger. It can charge in 20 minutes. बोलो भैया कौन सा लोगे? विच वन? 20 मिनट वाला, 3 घंटे वाला, 7 घंटे वाला, 20 मिनट वाला? अरे मैम आप बताओ ना, अगर की बात ही नहीं है, एक पिक करना है, कौन सा वाला लोगे आप? 20 मिनट वाला। आप कौन सा लोगे मैम? 160 किलोवाट। आपको पता है आपकी घर का पावर लोड, घर का छोड़िए, आपकी बिल्डिंग का पावर लोड आपके घर में लगाना है ना मुझे, आपकी बिल्डिंग की पावर लोड, हो सकता है आपकी कॉलोनी का पावर लोड। ओके फाइन, यू आर हैविंग मनी, यू हैव रिसोर्सेज, आपने लगवा दिया अपने घर में। प्रॉब्लम ये आपकी कॉलोनी में 10 लोग गाड़ी और ले आए, उनको भी लगाना है। You know what is going to happen? There will be an extraordinary powers requirements whenever all of those particular people will be charging their cars. Who will be controlling it? Power grid has to decide that okay boss, at this particular point of time this will be the load which would be coming to me. How can they decide? वो आपको फोन करेंगे मैडम गाड़ी चार्ज पे लगा रहे हो क्या? पॉसिबल नहीं है।
So there has to be a real-time monitoring system. Fine, laga diya. I get this information from a remote location. Basically, what I need to do is I need to create a digital twin of entire power network in a particular city. I need to develop a digital twin for entire power network for a full state. If there are more than one power distribution companies, I need to also ensure how that particular clustering happens. While doing so, I also need to understand, I need to create a digital twin for entire country. And then if I have to share some of the resource to, let's say, a neighboring country, how I can plan it. If I have to take power from a neighboring country, how I have to plan it. The rate of power varies at that particular level. आप जब पावर आपके घर में आती होगा ना 10 रुपए यूनिट 9 रुपए यूनिट कुछ होगा, उनके संग में कहानी अलग है. अगर सरप्लस अवेलेबल है तो सस्ते में मिल जाती है, पीक टाइम पे मांगोगे तो रेट बढ़ा देते हैं. So that also governs economics. Digital twin is not only a requirement at workshop level, manufacturing level, manufacturing of pharmacy, pharmaceuticals, manufacturing of machinery, manufacturing of anything. But these digital twins are also required at our level, other levels. कोविड से हम लोग अभी गुजरे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. आप सोचिए ना, पूरे देश में इतना कुछ हो रहा है, अगर आपको सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए, बिना डिजिटल ट्विन के हो सकती है क्या? अगर डिजिटल ट्विन्स उस समय होते हमारे पास तो कितनी जिंदगी आसान होती. हम यही ढूंढते रहे ऑक्सीजन कहाँ पर है, कितना मुश्किल है. जिस प्लांट में बना उस प्लांट से एक लॉट निकला, वो लॉट जितनी भी जगह पे डिवाइड हुआ उसकी जियो टैग से लोकेशन से पुट हो गई, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल डैशबोर्ड पे चली गई. एट एंड ऑफ द डे मुझे पता है उस अस्पताल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, परेशान मत हो यार. कैन यू डू समथिंग लाइक दैट? The thing is, I am not talking about something which is extraordinary, but my examples are basically to give you a thought process from your environment. Can you do something in this regard? If yes, you will be that particular single and most important entity which has done its requirement. आज से करीब 8 साल पहले अमेजन से आर्डिनो का नाम सुना है? क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली. आर्डिनो की एक पूरी किट मंगाई, उसको लाके सीखा कि कैसे ये यूज कर सकता हूँ. आई बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर हैड नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. Am I an expert in that position? No. I just have that information that yes, I can program something. I can build an algorithm. First COVID wave mein we made a ventilator in which we had a programmable microcontroller. It was easy for us to develop a full-fledged device. घर वाली आज भी नाराज होती रहती है, रोज घंटियां बजती हैं, रोज कुछ ना कुछ आ जाता है, कूड़ा इकट्ठा करे रखते हो, घर में सामान नहीं, जगह नहीं है सामान रखने की. बट यस, समटाइम्स एक्सप्लोरिंग थिंग्स रियली हेल्प्स. आई विल रिक्वेस्ट यू दैट वॉट एवर डोमेन इन विच यू आर, प्लीज सी एनीथिंग रिलेटेड विद AI. कैन यू एक्सप्लोर समथिंग? कैन यू क्रिएट अ सिंपल सोल्यूशन? डोंट फोकस ऑन वेरी बिग प्रॉब्लम्स. सॉरी, दे मे टेक टाइम. जैसे एग्जाम में हम लोग कभी बचपन में स्कूल में होता था ना, फाइनल एग्जाम में, तो घर से पिताजी निकलते निकलते बोलते थे, बेटा पहले ना जो सबसे अच्छे से आता वो वाला लिखना, उसके बाद फिर टफनेस के लेवल पे आना. सो मे बी इन योर डोमेन इफ यू कैन हैव सम इनपुट wherein you can work out a particular problem which is maybe not too complicated but give you an opportunity for learning, that could be a very good starting point. This requires a lot of things, big data analytics. There are so many algorithms which are available, so much information available. I cannot make you an expert in 1 hour interaction. I can give you just those particular things, how to do it. But the most important thing where I would like to take you now is,
This slide. Though the slide has a title, Challenges in Transitioning to Smart Manufacturing, this manufacturing can be replaced by any technology domain. It can be smart health monitoring. It can be smart or precision agriculture. It can be smart banking. So it can be applied in all the domains. And mind it, key fundamentals remain same. First and foremost problem that we all see, I assume that majority of you are working in colleges which are more or less private. How many from government institutions? मैडम फंडिंग अवेलेबल है भरपूर, जो चाहे खरीद सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा होता नहीं है कहीं पे. Why? There are so many checks and balances, so many things, medium term planning, long term planning. There are so many things which comes into picture. And we know that considering the size of population, even with governments which is doing so good work, still extraordinary resources cannot be made available. But what has happened in last few years in India is government has really started an initiative which is named as Technology Innovation Hubs, TIH. अगर गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे. ठीक? It has started industry accelerators. Then it has paid extraordinary stress on strengthening central universities as well as state universities as well as IITs and NITs, where they have tried to develop a collaborative ecosystem of infrastructure that if you want it, you can go and use it. Let me give you an example. याद रखिए और scribble कर लीजिए. This is applicable for all. There is something which is called as I-STEM, I-STEM. What it is? It is basically a portal which is managed by IIC Bangalore. The Office of Principal Scientific Advisor basically take care of everything. What the portal does, any kind of a research facility available anywhere in Indian research ecosystem, if it is procured through public money is where government funding comes in, it is available to all Indian researchers. तो आप श्रीराम कॉलेज में बैठे हुए हो, आपको इस्तेमाल करना है आईआईटी मद्रास की फैसिलिटी, वो अवेलेबल है आपके लिए. ठीक? आप किसी एक ऐसी जगह पर हो जहां पे हो सकता है कि आपने सुना भी नहीं हो उसके बारे में, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करो तो वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं अवेलेबल है आपके लिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ लिमिटेशन नाउ. And this implies there are a lot of opportunity which are available. I-STEM नाम देख लीजिएगा, याद रखिएगा. I-STEM पे अकाउंट फ्री में बनता है. एक्सप्लोर करिए, देखिए आपके रिफील्ड से रिलेटेड क्या क्या अवेलेबल है वहां पे. The issue now comes in is, all right, there is a far away facility which is available. I can do some kind of a research testing there, maybe some characterization if it is required for my work. How I can do that in my own classroom? Because early morning we discussed about developing better human resources. As a student, let's say if you are in a particular year, can you do something to improve life for your batchmates? Can you do something to improve life for, let's say, the younger generation who would be coming after you? Answer is yes. I will tell you how to do it. There is a special scheme which is launched by Ministry of Heavy Industries. The name of that particular scheme is Capital Goods Phase 2. And I think Phase 2 is now on the verge of completion. So very soon Phase 3 will be coming, which will be having much more money. They are creating smart manufacturing centers all over India. There are already 8 centers which are available. 9th, we are getting at IIT Roorkee. In fact, AARTI is getting that particular thing. Today morning, we heard about AARTI. What we'll be doing is, we will be having a complete set of iFactory where hardware and software, everything will be available, and it will be available for your learning and training purposes. So, since there are already some facilities, you are free to use them. If you need maybe our help, please reach out to us.
If you want to send your students, they can get trained. If you want to get some faculty members trained, that would be far better. See those particular concepts, come back and try to do that particular same thing here. Maybe not at that scale because you really do not need that scale, but it is not going to be capital expensive thing. It can be done in a very easy way. I had been in research for close to 25 years. And I can very proudly say I can make something for 50,000. I can make that same thing with better results in 5 lakh, make the same thing with far better result in 50 lakh, and maybe charge 5 crores for the same thing with far better results. What you really need is you need to have something physical with a tinge of software where your student can learn and explore. Because that thought process, once it is developed, they will be taking the lead in that direction. The second challenge which is available for all of us is our students, when they go to industry, they sometimes do not have an edge in emerging technology domain. So we would be able to fulfill that particular requirement. But again, one of the important requirement for each academic institute is there is already an extraordinary number of manpower available in industry. They have been working there from last 20 years, 30 years, maybe 35 years. They have a loyalty to that particular company. Can we do something for them? So if you start, let's say, working in this direction, your next objective would be, please call those industry people who are at, let's say, workforce level in your institutes, align some students of yours with them, and work for their reskilling, upskilling, and new skilling. Reskilling is fine. You are expert in theory. You know what is there in the box. Teach them in a bit how to use it in a better way. Upskilling is where some more skill enhancement comes into picture. And when I say new skilling, I'm talking about emerging technology domain. If you're able to do that, your student gets a first-hand exposure of how industry works and how this particular thing should be done by an industry. It is possible that while you do it, you will be getting an opportunity to work in a consultancy mode with that particular industry, which will be good for you personally, which will also be good for your department, and most important, your institute. In this entire thing, there are two very important requirements. Many a times we try to find complicated solutions for complicated problems. Viksit Bharat 2047 is not simple, it is complicated. But if we try to find complicated solutions for it, यार हम ना सिर्फ स्पेस में काम करेंगे, भाई जमीन से शुरू कर ले, एग्रीकल्चर से शुरू करता हूँ, ठीक? श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज के पास में कुछ एग्रीकल्चर की जगह है? इस कॉलेज के पास में 2 या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज में कोई नदी है? पानी है उसमें? ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को शुरू करा दें, वेयर वी फोकस ऑन प्रिसिशन एग्रीकल्चर वेयर प्रिसिशन इरिगेशन इज गोइंग ऑन. You don't need to really put a lot of water on land for growth of small plants. अरे उसकी जड़ पे चाहिए यार, focused irrigation. That is what I said, precision agriculture. There are so many ways. Bring sensors in that. From those sensors, collect data. Try to find a link between that particular data and the meteorological data available. Try to create a predictive model for next 3 years, next 5 years, next 10 years. Try to find out whether there is some kind of a relation between the data available with you and the past history record. If you can do those particular examples, that is the best way to teach your students. And there is a real example. Data is important. But for that, if you say that, okay, boss, I need a big data center, बिलियंस में भी नहीं आएगा, तो कभी काम नहीं करोगे क्या उसके लिए? तो चलो ना अपना डेवलप करना शुरू करते हैं. Try to do work on this particular domain in your classrooms. Make a group of 5. जाओ जाके फील्ड में देखो. आज छुट्टी है,
क्या करने वाले हो बेटा घर पे? कुछ नहीं, चलो आज वहां जाके फील्ड में देखते हैं। एक दिन अपने घर से भी जिम्मेदारी छुट्टी लीजिए। Try to work on those particular domains. If overall we are able to fulfill these 3-4 requirements, I'm very sure that resistance to change will not be there, which is the last and most important point on my slide. Few years back I used to say Google सब कुछ दे देता है, रोटी नहीं दे सकता। आज मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कहता हूँ गूगल से रोटी भी बन जाती है, क्योंकि 3D प्रिंट कर सकता हूँ मैं उससे, because there are 3D printer which can print food. My own students have done it, and they sell that food at a very high price. अरे उसमें वो एक्स्ट्रा पाव वो है ना, सब 3D प्रिंटर ने बनाया है, मार्केटिंग एज मिलता है, तो गूगल रोटी भी देगा आज की तारीख में। This implies that resistance, whatever was there, now we have to do something so that that resistance to change is removed. Starting small can give you some real good outcomes. That is what I wanted to talk in terms of technical things. Now let me give you an overview about few other things. 3.5 years back, not 3, maybe 4 years back in IIT Roorkee, I was attending an industry event where I was invited to deliver a talk, and some owner of a industry who is also chairman of one of the biggest industry conglomerates, he said हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा R&D हो, बट ये IITs जो है ना ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। क्यों जी? इनके दरवाजे ना लोहे के हैं। Did you got the point? What he wanted to convey is it is too difficult for us to approach them, or whatever that they do is space category, rocket science, far away from that particular groundwork what is needed. I understood that particular thing, and henceforth we initiated one particular scheme at IIT Roorkee which was named as Tech Sarthi. What we did is we send our faculty and students on our money to visit industries where they used to do a process audit of those industries. Process audit is whatever that you are doing, fine, we will just looking at it as a third person perspective. But mind it, we are experts in this particular domain. So the faculty who will be visiting, he or she will be an expert. And sometimes we used to send multiple people. With that process audit, we tell the industry, see, here are your inefficiencies, here are your areas of improvement. This would be a suggested plan of action. If you want to do it, please do it. And to do it, basically, you engage your own people. We will be helping you in understanding things. In certain cases, there were minor improvements which are needed, which used to take maybe 5 days, 7 days period. So our students used to get an opportunity to work for that industry. Fine, here is a simple problem, here is a simple solution. A dedicated person will be doing it. My student gets an exposure to work in industry. By doing that, my phone right now has maybe 1200 to 1400 numbers of owners of those industries. It's a direct connect. एक आध साल पहले मैंने पूछा लोहे के दरवाजे हैं क्या, बोले सर है ही नहीं दरवाजा. While doing it, we also understood that majority of MSMEs in India, they really do not have that typical understanding needed for international level standards. They have a wonderful understanding about their process. They are running businesses, they are earning money, they are in profit zone. But many a times, what is needed at global level, they do not have that information. Global standard at European level, maybe Germany, will be needing slightly different ways of handling raw material than what we are doing right now. We also provided help to them that, okay, this is something which you need to do. If you do it, your particular products will be easy. They will be at an ease place for getting recognition at global level. तो हमारे मोदी जी ने जब कहा था ना वोकल फॉर लोकल, तो वो आइडिया वही था कि सब आपके वोकल फॉर लोकल को करना है, यहाँ वाले लोकल को ग्लोबल स्टैंडर्ड से कैसे मैं फुलफिल करा दूँ.
This implies standards are a very important requirement. BIS का नाम सुना है? BIS यूरोप अरे यूरोप कहाँ सर, भारत में है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। I do not know whether we have a proper curriculum in which we teach BIS standards. There are few exceptions. IITs also have few courses, but maybe we need to strengthen all of those particular things. अगर और कुछ नहीं कर सकते तो अपने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दे दीजिए कि बच्चे ये वाली जोन के BIS स्टैंडर्ड्स का रिव्यू करो और रिव्यू करके बाकी लोगों को समझाओ. That's how you step in. Why this is important? ChatGPT का नाम सबने सुना? ठीक है जी. मार्केट में जहां से जो इंडस्ट्री जिसमें पैसा होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा हम पे ऑप्शन है नहीं. एक ऑप्शन है ऑटोमोबाइल. ठीक, बहुत पैसा है उस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा मैन पावर भी इन्वॉल्व करते हैं, बहुत बड़ा उनका सप्लायर नेटवर्क है, तो वो एंसिलरी यूनिट्स बहुत सारे बनते हैं. गुड मनी. सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन. चल रहा है पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में, बल्कि दशकों से रियल एस्टेट का एक बूम चल रहा है. हर जगह देखते हैं बिल्डिंग खड़ी हो गई. बिल्डिंग में जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट का क्या कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे वो बिल्डिंग खड़ी होनी है. देयर आर सो मेनी पैरामीटर which come into picture. Can you create a ChatGPT only for civil engineering concrete technology? मैं तो एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, बहुत बड़ी नहीं है. कैसे बनेगा? सिविल के लिए I have to follow standards. Those standards are already available. This implies I do not need much data. I have those algorithms already available. What I need to do is, I am a computer engineer, or maybe I am a mathematics person. I align with a computer engineer. भाई तो कोड वोड लिख लेता है, किसी को पकड़ा तो UI पे काम कर लेगा. Bring them together, and when you bring them together, can you create maybe a GPT for construction? Can you create a GPT for pharmacy? कितना मुश्किल है. So as a student, if you can work in that direction, please push your teachers that you want to work. That's how we are going to make a change. In last 8 months or so, our teams have helped in plantation of 1 lakh mulberry trees in Khoot village in Almora district. 1 lakh, छोटा नंबर नहीं है. All the trees were planted by women. If I say to clap on it, sorry, I'm not saying the right thing. All the trees are planted by women because henceforth the complete processing in terms of sericulture समझते हैं? I'm talking about silk. The processing and secondary processing up to the market level, where they can create their own startups and push this particular thing for a high value manufacturing with lot of money. That is important. तो अगर मैंने कहा कि 1 लाख महिलाओं से मैंने पेड़ लगवा दिए, मजदूरी करवाई थी क्या? Not very important. What is important is entire livelihood improves. There has been a problem of migration. रेगिस्तान वाले एरियाज हैं, वहाँ पे गांव खाली हो रहे हैं. पहाड़ों में जाइए, पहाड़ खाली हो रहे हैं. हर कोई प्लेन में आना चाहता है. जिंदगी अच्छी है. प्रॉब्लम दूसरी भी, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. For this particular initiative, we have partnered with Central Silk Board, where we will be creating a national standard for sericulture cycles. Also partnering with multiple startups and industries to create a complete supply chain system. So, mulberry tree, leaves, sericulture cycle, cocoon, production at primary level, filtering, secondary processing. For secondary processing,
the yarn, from that different products, a complete ecosystem. Can AI do something in it? Oh yes, please create me few sensors. Please give me that particular data from those particular sensors for effective monitoring, because this is a very complicated chain which we are going to establish. Can you be a part of it? Why not? More than welcome. But we need that particular zeal that yes, you have a hunger. We have been working on development of electric vehicles. There are already 2 products out in market. Both are in commercial testing zone. One is a typical vehicle for Divyangjan, where basically if you have a portable wheelchair, the wheelchair becomes an integral part of vehicle. Honorable Governor of Uttarakhand inaugurated it, and it is right now in commercial testing phase. Development time, maybe in a year, not more than that. Development of a full-fledged vehicle in this record time is difficult. Another product is we have developed a 2-wheeler modular chassis which can be used for multiple 2-wheelers. Honorable Gadkari ji inaugurated it. It is already in market. You see, on one end, I am talking about Mulberry, which is Gram, Gaon. On one end, I am talking about a very high-end emerging technology. And in doing all of those particular things, if you recall, I talked about MHI's initiative for smart manufacturing. This implies there's a lot of complexity. While you work for any kind of a project, product, please do not leave your grassroots. If you can do that particular thing and develop that particular feeling in your students, Viksit Bharat kisne roka hai yaar? I'll be stopping now. If there are any queries, I have a lot of exposure, done a lot, no issues about it. But it was not my personal effort. There were so many good people, all of them aligned, and that's how things have really happened. If you feel that there is any kind of a thought process which has originated, or maybe any kind of a question which you have, feel free to ask. I'm more than happy to respond. हाँ मैडम, कुछ दिमाग में चल रहा है, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली हम लोग के स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट लीड किया था व्हिच इज रिलेटेड टू द स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, एंड उस प्रोजेक्ट में हम लोग सोच रहे थे, जो आपने अभी जिक्र भी किया इस चीज़ का, कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट लाइक सैटेलाइट से कुछ डेटा हम लोग को इन्वॉल्व हो, तो हमने उसको ऐसे मोल्ड करना चाह रहे कि हजार्डस वगैरह से जो है उससे हम लोग प्रिवेंट कर पाए। Are you talking about disaster? Talking about disaster? Yes, disaster and hazardous events, जो भी होता है। Tech for disaster is a very important requirement, and if you are, let's say, working for irrigation and bringing that particular tech for disaster component, it is a priority domain. For data, you can approach Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun, which have access to all the satellite data. For academic purposes and non-commercial purposes, they would be more than happy to provide you that support. They are in fact open for it. If you feel that there is a connect needed, feel free to connect with us. We will get you connected. But one thing which is very important is when you approach to such organizations, such bodies, I will request you to have a proper background, what you really need and what you will do with that particular information. Okay, just asking stray questions will be wasting their time. That is sensitive data. And if they agree to provide it, they need to be sure that yes, there has to be a good use about it. So there is a lot of data available. There is absolutely no issue. Any other query? सर, मेरे घर के ऊपर थोड़ा सा गार्डन है, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो वैसे मैनेजमेंट से, बट मेरा शौक सर रोज पानी डालना पड़ता है पेड़ में? हाँ, नहीं सर, वो दूसरा प्रॉब्लम है, जब कभी हम नहीं होते, बिकॉज माय किड्स आर आउट ऑफ टाउन, जब हम नहीं होते लोगों, तो प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम जज करें कितना पानी डालना है,
डलना है या नहीं डलना है। तो उसके लिए सेपरेट प्लांट के लिए तो इक्विपमेंट्स हैं, आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि हर प्लांट के लिए अगर हम सेट कर पाए, क्योंकि हर एक की नीड अलग अलग है। कई बार सर क्या होता है ना, इच्छाएं बड़ी होती है, पूरी होनी चाहिए कि नहीं, ये डिपेंड करता है हाउ मच इंटरेस्ट एंड हाउ मच मनी यू वुड लाइक टू स्पेंड. There are individual sensors which can sense water quantity, and I think the price is maybe around 200 rupees and sensor. But then there is also a network of other things which would be going in it, and it would be a slightly costly affair. सर एक काम करिए ना, अपने घर के लिए एक इनिशियल प्लान बनाइए. कोई बहुत, इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट, इट इज ईजी. नहीं होता है तो मुझे कॉल करिए, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. इट्स वेरी ईजी. एक बार वो जब बन जाए ना, तो अपने स्टूडेंट को कहिए कि बेटा अब इसका ना प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करो, और जो डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, उस डेटा से एक एनालिसिस भी करो. तो आपके 5 बच्चे प्राइस ऑप्टिमाइजेशन में लगेंगे, 5 बच्चे बाकी काम में लगेंगे. उन 5 में से हो सकता है कोई 1 या 2 ऐसे आ जाएं, सर कैन वी मेक दिस एज अ बिजनेस. हाँ बेटा स्टार्टअप खोल लो ना. दिस इज हाउ अपॉर्चुनिटीज ग्रो. इट इज अ वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट यू हैव. मेरे संग भी है, किस पेड़ में कितना पानी डालना है. मेरे को डांट पड़ती है कि तुम बहुत ज्यादा पानी डाल देते हो. भाई मेरे पे टाइम नहीं होता, जितना होता उतने में डाल दिया. बट हो सकता है फिर मुझे डालने की जरूरत है ना पड़े. देयर इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम व्हिच डज एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल, आई हैव एन एक्वेरियम in which I need to switch on the light and switch off the light at a defined time. 5-6 साल पहले मैंने उसके अंदर एक टाइमर लगा दिया, वो शाम को 6 बजे अपने आप ऑन हो जाती है, रात को 1 बजे बंद हो जाती है, मेरा काम खत्म. So that automation is not problem, but finding an automation which is already available in market for a specific problem, that is a issue. And if that is an issue, that gives an opportunity. Engage your students to fulfill that particular opportunity. बिल्कुल हो सकता है. और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. आप अपने आसपास पे देखिए क्या नई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है. आप हर समय ये देखेंगे कि एक बड़े इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री पे जाएंगे. नहीं यार, छोटी इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां ज्यादा जरूरत है. कैन यू डू समथिंग फॉर दैट? एनी अदर क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन? यस मैम. जैसे अभी आपने बताया, इनिशियली आपने शुरू किया कि सस्टेनेबिलिटी. तो मेरा ये चैलेंज है कि अगर हम ग्राउंड लेवल पर या छोटे छोटे स्टेप लेके हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी के बारे में अगर कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूवमेंट हो रही है. थोड़ा सा सोशल वर्क वाला जोन है. There is something which is called as community outreach. What has happened in last few years is our students, including us, we all have been too depending on our mobile phone screens. ठीक है, कई बार रील होती है, कई बार कुछ अलग चीजें होती हैं, but we are engaged in those particular things. We do not interact with people. If you can start an initiative in your classroom, maybe your college, for community outreach, कुछ नहीं करना. सैटरडे को अपन सब लोग 15 बच्चे, 20 बच्चे, एक टीचर, आसपास की एक जगह जाएंगे. मैं नहीं कहता गांव जाओ, कोई इंडस्ट्री है वहां चले जाओ. ठीक है, कोई मान लीजिए कॉलोनी है आसपास है, वहां चले जाओ. वहां जाके हम ऑब्जर्व करेंगे एंड वी विल जस्ट ट्राई टू सी हाउ वी कैन improve something here. I am very sure sustainability will come in that particular domain. People will identify it, and when they see it, they will also start thinking in that direction. कोशिश करिए मैम, ऐसा कुछ अपने शुरू कर सकते हैं क्या? क्या बेनिफिट होगा? समाज के लेवल पे बेनिफिट होगा. एक तो बातचीत बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी एक दूसरे की, but then we also will be having a better understanding of our ecosystem. If I do something which is good for US or Japan, it is not going to really make a big change. The biggest change will be when I do that particular change here. अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी की कन्वोकेशन में मुझे स्पीच देनी थी एक. मैंने उनसे ये कहा था कि यार तुम दुनिया में कुछ कर लो, अपने गांव के लिए क्या कर रहे हो, 5 साल बाद मुझे बताना. तुम में से जितने बोल पाए
उन सबको मैं मान लूंगा तुम अच्छे इंजीनियर हो. So can we do that particular same thing at this particular place? It's not difficult. और सैटरडे के दिन 1 घंटे की ट्रिप में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, और 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपनी जगह के लिए. ठीक. Don't make a compulsion. There would be some who would be volunteering for it. They would be more than happy to join it. Maybe start with them. Others will automatically join. When a big ship starts sailing, everybody would like to get aligned. But for a big ship to sail, someone has to make a first start. इस community outreach को शुरू करिए ना, क्या दिक्कत है? I am sure in whatever institute you are working, you are manually more than happy to support it. But when you approach them, go with a plan. सर ऐसे हम शुरू करेंगे. हॉस्पिटल जाइए, ठीक, किसी इंडस्ट्री जाइए, कुछ नहीं है, कॉलोनी में जाइए, आसपास में कोई तो कॉलोनी होगी, देखो वहां पे एक्सप्लोर करो क्या दिख रहा है. ये स्कूल के लेवल पे शुरू होना चाहिए था. शायद आज की तारीख में कई स्कूल्स में होता भी है, बट अगर ये कॉलेज के लेवल पे हो तो क्या हुआ, एक थॉट प्रोसेस इज ऑलरेडी देयर. इट वुड बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड मे बी फाइंड सोल्यूशन फॉर दैट. देखिए ना मैम कितना हो सकता है. एनी अदर क्वेरी सर? यस सर. एक सर प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ और मेरे माइंड में आता है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक शायद मैं वो नहीं कर पाया. वो ये कि हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब होते हैं, लाइक एलसीडी ट्यूबलाइट है ना, या एलईडी ट्यूबलाइट सॉरी, या फिर हो सकता है आरओ सिस्टम का मशीन मोटर. मैकेनिक आता है, पेमेंट लेता है, मशीन रिप्लेस करता है, पुरानी मशीन ना छोड़ जाता है. तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि मेरा सर जो प्रॉब्लम है वो ये कि अभी हम वो टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा होता था कि उसे मैकेनिक ठीक करता है, अब वो हम ठीक नहीं करते, रिप्लेस करते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट और वाटर टाइम. क्या कुछ ऐसा हम नहीं सिखाएं कि उसको हम रिप्लेस करने की बजाय रिपेयर करें? There are few things, sir, which are defined by business economics, in which sometimes we do not have that particular, let's say, control. हमारे साले साहब कई बार कहते हैं, जीजा जी जब तक चीज के प्राण नहीं निकाल लेते तब तक उसको फेंकते नहीं है. मेरे साथ. So the issue is, it can be repaired a number of times, and when it becomes in an irreparable condition, it can be reused for something. But that is your mindset. If you work with that particular mindset, it's fine. And if you have time to do that, many a times you need to take care that whether it is good to spend time in repairing, or maybe I can use this time for a far more productive thing. But yes, right now products are being designed for obsolescence. Nobody can do anything about it. In earlier days, we used to have those CFL bulbs, which used to have some warranty. I hope it used to be maybe 6 months or 1 year. Then came LED with a warranty of 2 years. After exact 2 years, 15 days, 20 days, the LED kaputs, job done. It is designed for obsolescence, and that is how business works. If there are ample resources and time, fine, people should repair it. There is absolutely no issue. I do a lot of repair as well as rework and reorientation on my own, because that is my passion. That is a stress buster for me. So now I return home at around 9:30, 10. Sometimes 1 hour getting involved in these things is a stress buster. It depends on person to person. Teaching people how to repair, should we do it? Why not? But teaching to everyone how to repair it may not be needed. But yes, the current technology, what is available, is not too complicated. It is easy, because majority of the components are designed in a very modular way. If a component gets banned, it is easy to take it out, easy to get it replaced. My brother is a plastic surgeon. He knows how to do soldering. In plastic surgery, you don't have to do soldering, but he knows. So, of course, as a passion, you should work on it. Any other query, sir? Yes, ma'am. कैंसर डिसीज के लिए कुछ न्यू वर्क हुआ है, न्यू डिस्कवरी For cancer patients, कैंसर डिसीज. lot of work.
अभी latest Lot of work, extraordinary work. All those particular information, database, everything is available. Everything. Patient-specific database will not be available because there are some issues, ethical issues. But yes, overall database is available. Lot of work, extraordinary work. ICMR से contact करिए. Any other query? Patiently listening, and I hope you will take this entire discussion. Any kind of help, assistance needed from my end, please feel free to connect. My number is available with your director as well as Aparna. So feel free to reach out. Please don't send me emails. I do not get time to read them. If you have something really important, please send a WhatsApp. I will make sure that maybe within a day I will be sending you my response, and if needed, I will give you straight away a call. But please take things move forward. You have a lot of responsibility, and with that particular responsibility, maybe we all could do real wonders. Thank you. Bye bye. Thank you so much, sir. The session was really very wonderful and very instructive. And of course, we gained some practical knowledge. So after this, we can proceed for the token of gratitude. We request to Director sir to felicitate. Thank you. मैं यहाँ बैठ के सुनूँ ज़्यादा. Okay, now I request Professor Alka Chaturvedi Madam for present a vote of thanks. Ma'am. It's okay, it's okay. Everything was fallen down. Good afternoon, everyone. We at SRIIT wear the attitude of gratitude. On behalf of the organizing committee of ATAL Faculty Development Program, I, Alka Chaturvedi, deem it as a pleasure and pride to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all those who have made session 1 enriching and insightful. First and foremost, I extend my sincere thanks to our distinguished resource person, Professor Dr. Akshay Dvivedi, Professor and Dean, SRIC IIT Roorkee, for sharing his valuable knowledge with us. Your enlightening session on AI-driven manufacturing excellence, bridging product development, process optimization, and environment sustainability was something exclusive, sir. You stated that we are the best and we are the best resources. You also shared with us the path, saying that sleep to dream and wake up to fulfill your dreams. Create your own circumstances, your own working environment, dream big, set your targets, and be the change makers. You have really ignited a spark within us and within our faculty team members.
I am greatly thankful to Dr. Ila ma'am for sparing her valuable time. Thank you so much, ma'am. I am greatly thankful to our director, Sri Ram Institute of Information Technology, Professor Pavan Agarwal sir, for his constant motivation and guidance and making this FDP session possible. I would like to thank all the participants for enthusiastic involvement and thought-provoking interactions. Last but not least, sincere appreciations to the organizing team, technical support, staff members, student volunteers for seamless coordination and efforts behind the scenes. With that, we conclude session 1 on a note of gratitude and learning. Thank you so much, sir. We look forward to your continued participation in the upcoming session with the same enthusiasm. Thank you all once again. Thank you.